And first of all, congratulations for getting the top rank in the civil services examination. Thank you, sir. And last year, you were selected and you got rank 87, right? And Yes. this year, it's rank 16. So, how are you feeling now after getting the rank, getting the service which you wanted to join? Sir, highly relieved, sir. Number one, that I don't have to give the exam again. And extremely happy, sir, that efforts paid off. And also that things went well because we all know how uncertain this exam is. So, fortunately, things worked out, sir. And can you please tell me when you started the prep? When you thought of ki I shall give this examination, and if I may give a brief background of you, that you are an IITian, you come from a civil servant family, right? So from that family, from that background, when you chose to write this exam. Yes, sir. Because of having seen my father's work, I did have some inclination towards the civil service. I did like the type of career. But I think the decision got finalized in my first year of college when I interacted with many people. Many students from IIT Delhi, especially, do give civil services. Talking to them, talking to seniors, and also my experiences in NSS. That I felt they gave me an exposure to the type of work which I felt that yes, this is the kind of work I want to do. So around the time, around first year of college, I decided to give civil services. I started preparing around mid 2019. I was just about to enter third year around then. So I joined coaching. Back then, I used to live in Delhi only. So I joined coaching. The fifth semester was quite heavy. So at that time, I was only able to do classes. But yeah, my prep started. So broadly, that was the foundation, sir. And those who don't know that Ayan's father is in Indian Police Service, Madhya Pradesh cadre, right? And he is a senior police officer now. And I am coming to this thing. Many say that if you are coming from civil servants family, then there is a edge that you know the things that what kind of challenges service has, what kind of sacrifices service require. Can you please elaborate your life on coming from the Indian Police Service officers family? Sir, definitely, I was fortunate to come from a economically sound background. That was the biggest thing, I think. Secondly, sir, having that idea to go for civil services from, let's say, childhood itself. So, from first year itself, I started exploring career options with civil services as a strong option. This allowed me to give a serious effort from my third year itself. For a lot of people, they do not know about civil services or they start preparing for it after doing a job 1 or 2 years. So, I think that is one advantage. Thirdly, sir, parents always did support me, my decisions, and always helped in whatever way they could. And also for interview stage, my father's personal experiences were quite helpful. He often told me about what happens on the ground actually. So that helped me frame my answers better, sir. And coming from IIT, there is a thing that when you are from IIT, the kind of environment you have, because as you have said that many candidates do appear in the exam. So, do you believe that that kind of strong peer has helped you in the initial years of your journey? Yes, sir, I do think so, sir. Especially in IIT Delhi, there is a strong culture of civil services. Even within my branch of around 86 people, I think almost 12 or 15 people were giving civil Oh, services. So, sir, there was a good competition between all of us, I think. We all wanted to do the best. We all wanted to be the first to crack civil services from our batch. But also, sir, discussions also, helping each other, whether it was in doubts or resources, anything, we did help each other. So, these were the twin benefits of this, sir. okay. And in your third attempt, you have achieved rank 16. Last year, it was rank 87. In your first attempt, what was your stage and where you were not able to clear the exam? In which particular stage? Yes. Sir, in first attempt, I was not able to clear prelims. Okay.
So, Yes. in your first attempt, when you were not able to clear the prelims, can you please elaborate on the things which you missed? I wish I could have done those things, then I would have cleared the prelims. Sir, I think there were two big learnings. Number one was that in my first attempt, I overdid current affairs. And while it's not wrong to do current affairs, but we have to realize that it comes at the cost of static portion. We Hmm. feel that if we have done Lakshmikant three times, if we've read, revised so many times, then we're done. But what matters is whether we are able to solve the questions or not. And this is what I realized in the actual exam when I missed two or three simple static questions. And that is by how much I had missed the cutoff. So for my second attempt, this was a priority that static will be my center. Second learning, sir, was that in the first attempt, there is a lot of pressure on the day of the exam. Even though we all know that prelims is a difficult exam, it is going to be a surprise. Even then, when we sit in the exam hall, when the question paper comes in front of us, we do get shocked, we do get anxious. So I think, sir, tackling that was the second thing. Automatically, because it was my second attempt, there was lesser pressure, lesser surprise factor. But also, I took conscious efforts to give offline mock tests. If I was able to go to the center, then that. Otherwise, I would print mock tests and do it at my home itself. So that was the second thing. And I did other things also to be able to stay calm on the day of the exam, which I feel for prelims and interview is very important. Sir. Coming for the current affairs, when you are in your first attempts, then current affair becomes the most important thing of your life. There are two things to it. That number one thing is that from somewhere here or there, you hear that 70% questions are coming from current affair. Second thing is, and that is a very interesting thing, you enjoy studying current affair. And Absolutely, sir. you just enjoy it, and because you are just new to this world of civil services examination, and you are learning about so much things from the current affairs, so that addiction, I would say, of current affairs is a deadly Yes, thing, right? definitely, sir. Has this happened with you? Yes, sir. Both these things, sir. The second one, yes, sir. I think that is something that most people do not think that this is also a reason. But yes, sir, because after we have already done static once or twice, it becomes boring to revise it. Revising the same book, same textbook is quite boring. But doing more current affairs, which is often very easy to read also, Easy to read. less dense or very finely printed, beautifully written in PDFs, I think that becomes very attractive, sir. But so the first thing is the more prominent thing that we always feel that we should study more of current affairs because what if a question comes from there? But that is a trap, sir, in my opinion, because there is no end to current affairs and the Yeah. returns on doing current affairs are very low, sir. So I believe, sir, static, that too, especially polity and economy, these should be very strong before we move to current affairs, sir. Can I say it that current affairs supplement the static? It's not the case that current affair is equal to static, right? Mhm. Yes, agreed. Okay. Coming to the prelims, and can you please tell me that if someone who is just going to appear in the prelims now, so according to you, what kind of strategy one should follow? Sir, number one, I would say is to prioritize the areas. So again, polity and economy, in my experience, are the most important because not only do many questions come from these areas, but relatively doable questions. If the concepts are Hmm. sound, then these can be done. If we talk about topics like ancient medieval history, then the returns on this are very low. We have to study a lot to get maybe one or two questions in the exam, which are also quite random. So prioritization, polity, economy, modern history, environment to some extent, these should be very well done. Secondly, sir, PYQs are very important. PYQs should be done backwards, sir. So first 2023 ka paper, then 22, so on. Because often from the last few years, questions get verbatim Hmm. repeated, even But the same options, same answer. Thirdly, sir, exam temperament, which we often say, exam skill, time management, order of attempting the questions. This should be sorted out because this does matter. Again, staying calm during the exam, having a very clear strategy on which order someone is going to attempt the paper, how many questions they are going to attempt. These do make a difference. Lastly, sir, current affairs also, even though I put it below static, but it has to be hmm. done naturally.
I True. would say a more horizontal approach should be taken, very selectively doing the important things. I believe, sir, YouTube videos I always felt were more effective in covering current affairs, the compilation videos, or the most important topics, rather than reading the bulky material, which you have to revise a few times to be able to actually make use of it, which in my opinion is not a very good use of time. And coming for the PYQs, there are many candidates who do the PYQ, but they fail the prelims. I personally think that PYQ analysis is the right term. Instead of doing 25-year questions like a mock, PYQ should be analyzed. So, what was your method to do the PYQ? Sir, I would say both the things that analysis also and questions also. Analysis, sir, helps us. Number one, it helps us gain clarity about the exam. Again, when I talk about doing current affairs selectively, it is through PYQs only that we get to understand to what depth we have to go in any topic and which Hmm. kind of question we have to go. It is through that analysis I found that I only have to look at the one or two most important or relevant facts about any current affairs rather than reading all the little nuances. And secondly, sir, the direct content also, because as I mentioned, sir, questions often do get repeated either directly or indirectly. So both these things are important, sir. Coming for the test, there are a number of things. And when you were giving your first attempt, you might have heard that if you solve 100 tests, then you will clear the prelims. If you solve 120 test, 130 test, 140 test, there is no end to it, right? So, can you please tell me that what is the ideal range of solving the number of tests, and what was your approach to solve the test? Sir, I would say this was another issue I faced in my first attempt that I tried to do too many tests, but my knowledge base was not sound enough. In my second attempt, I did do many tests. I would say more than 50, but that was because I had already prepared once in my first attempt and again in my second attempt. So, sir, number one thing I would say is that we should try to give at least a few offline mock tests for the Hmm. pressure simulation. Even two or three are good enough. If one is not able to go to the center, then simply printing a question paper, printing OMR. That will give the person enough experience. For online tests, sir, I believe full length tests are a good idea because they teach us, they help us practice logical elimination also. Again, practicing our order strategy of attempting the exam. And again, I do believe that the indirect application of knowledge that becomes very important. So the utility of tests is more for practice rather than aiming to get direct repeats in the exam. Repeats also do happen. In my Sure. 22 prelims, I did notice a few questions repeated from mock tests. Not as high as coachings often do claim, Hmm. but a few questions do come. So, sir, exact number, sir, I would say depends on the person, their situation. I would say a person should start giving tests early in their prep. Definitely in the first attempt, it becomes difficult. But after revision, you should not postpone tests too much. You can start with full length tests, assess own prep, and then decide. Coming to the elimination techniques, there are many myths about it. Yes. Some claim that if you watch my 2-hour video, then 30 questions are coming from this elimination technique, and some go to extend to claim 50 questions. I personally feel elimination techniques do help, it do work, but only if you have your own applied those things, only when you have practiced enough to claim that yes, now I have decoded this particular thing. Do you agree with this? Yes, sir. Sir, 100%, sir. I always say that logical elimination or elimination techniques are not like a formula that once you learn the formula, you will directly solve the answer. It's like maths. We have to learn it, but then we have to practice it. Then we have to Hmm. practice it under time conditions, under pressure. Only when we have practiced it enough to truly understand the concept, then in the exam we will be able to do it, sir. Because often we hear that logical elimination घर पे चल जाता है, exam में नहीं चलता. That is due to the practice factor, sir. Right. And it is true, sir, that in the last year's pattern, the scope of logical elimination has been reduced but not eliminated. Even if it can help in a few questions, then that is a very significant thing, I feel, sir. And as you were saying that during your first attempt, you have missed by 2 to 3 questions, right? So 3 questions can change the game.
Absolutely. Coming to the making notes, have you made any notes for the prelims? So for prelims, I used to make notes for current affairs from The Hindu. There also I focused a lot on conciseness. I would make single liner or two liner notes per topic. For the static subjects, sir, mostly when I read from the book, then I did not make any notes. But if I read from NCRT, usually I would just take screenshot of the important portion and then compile that. But sir, I think making complete notes for prelims becomes very lengthy. It may not be the best use of time. For mains, definitely notes are very important, sir. Uh, Coming to the prelims, as you were saying that the exam condition is different as compared to your prep. And I have seen many candidates who are very good candidates, but in the examination within those 2 hours they fail. They don't fail after the examination. So can you please elaborate on this particular thing? Yes, sir. Sir, especially for those giving their first prelims, this is something that often does happen. When we go into the exam hall, even though we might be confident and we might be very well prepared, but when the paper comes in front of us, when we see difficult questions, when we see that we are not able to solve quite a few questions, or even if we are not sure about multiple questions, then the panic does start to rise. Also, sir, we start to doubt ourselves. Even in simple questions, before marking an OMR, we think twice whether it is right or not. So this is, sir, this is a very different feeling from mock tests because the consequence is there now, which was never there in mock tests. So, sir, for this one best solution I found was to give offline mock test. Other was to be very mindful about this, that this is going to happen, but this is going to happen with most people. So if we can just endure it. If we can be mentally prepared for it, then we will gain an edge over them, sir. फर्स्ट अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स था तो उसकी एक रात पहले मुझे ये डर था कि एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेगा जो मैंने पढ़ा हुआ है वहां वहां से Yes. Coming to the examination, right? In the examination, when we solve the actual prelims, some of the time we mark a particular option, and while coming back again, we change that, and most of the time it becomes an incorrect question. Have you faced it? Sir, I found a good strategy for this. This Okay. again came through experience of mock tests. That, sir, in my first round, when I'm just marking within the rough portion or sheet itself, I would either mark as S for sure, T for tentative, or D for doubt. So now the important thing was sure does not mean that I am sure about the answer. Sure means that I have thought about this question. I will not think more about it. That in my within what I have thought, I am sure that I am going to finally go with this only. This is something that I had to be liberal with. I have to go with at least 60 or 70 shores. Otherwise, there is not enough time. We would ideally want to recheck every question, but we cannot. Tentative was that which I had arrived at an answer, but I would want to recheck because I have a good amount of uncertainty. Doubt was those questions where I did not arrive at an answer. So this is where I would have to spend time at the end. Then, sir, after I'm done with 1 to 100 this first round, I would mark all the sure questions in the OMR. Again, around 70 would be filled. And also the tentative, I would quickly go through and mark. Last I would have around 20 minutes, remaining 20 or 30 minutes that I would use for the doubt questions, sir. Okay. Can you please tell me the number of questions you used to attempt in the prelims from your first to Yes. third? Sir, in my first attempt, I used to attempt between 90 to 95. Hmm. This was a suggestion from a senior. I blindly followed it. In my second attempt, sir, through my experiences, I noticed that upon attempting 100 questions, I was getting better marks. So from that point onwards, in every mock test and in actual exam also, I attempted 100 questions. Even if it was a blind guess, but I did. This was a pre-thought out policy that I will attempt all 100 questions. But definitely, sir, people should experiment before following this strategy. मैं 100 नहीं करता था, मैं 99 करता था, एक शगुन का छोड़ दिया करता था। अ, इसमें क्या है ना कि and it all depends the kind of candidate you are, as you are saying about the mock. So when you solve the mock, you get to know कि even if I'm going to solve 70 question, 12, 15 are going to be wrong. So I'm not a person who has a very good accuracy, right? Yes. Hmm. Absolutely, Coming sir. to the
Coming to the CSAT, although you are from IIT, but now even IITians are finding it Yes. difficult to clear the prelims. Am I right? Yes, sir. Many of my friends were not able to clear, sir. So, have you struggled with this particular thing, CSAT, or you were fine with it? Sir, I did not prepare anything for it specifically, but during the paper, it was very clear to me that this is a tough paper, especially for those who are not from maths background, because I also have maths optional, Hmm. so I had a good advantage there. But definitely, sir, in the last year, especially maths level has risen. But sir, I would say there are two sides to this. Number one is definitely the prep side that everyone does have to prepare CSAT. Second side is also about those 2 hours of the exam. Because what I've noticed with my friends is that often they would take those 2 hours lightly. They would think that IITians hai, nikal hi jayega. Hmm. So they would often Hmm. not do it with same seriousness that they would attempt the GS paper. Yes. And also, sir, one common mistake I noticed in my friends that they would only rely on the maths portion. They would not even Hmm. look at the comprehension questions. But truth is, in maths, there are some easy questions, some difficult questions. In comprehension also, at least some easy questions are always there. Right. So every question has to be treated equally, sir. And time management is one of the biggest problems people might face because, sir, sometimes it happens on a single question we get trapped for 5 6 minutes Right. thinking that इतनी मेहनत कर दी है थोड़ी और Hmm. कर लेते हैं. थोड़ी That is a और big करते trap, sir. Yes, sir. So हैं time वो जो management is लालच है, important, sir. वो जो लालच हाँ, है absolutely, sir. एंड अयन यहाँ ना एक और दिक्कत आती है कि कुछ लोग कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, Hmm. वो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, एंड देन दे आर थिंकिंग दैट माइट भी निकल जाए, तो आई थिंक अटेम्प्ट का भी एक इशू होता है। आप कितने अटेम्प्ट Yes. करते थे सीसेट में? सर सीसैट में कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी. मेरा था कि इनिशियली फॉर द फर्स्ट 70 to 75 मिनट्स आई वुड डू मैथ्स जितना भी हो पाए. थोड़े बच जाते थे, नहीं होते थे, बट 75 मिनट्स वॉज द हार्ड डेडलाइन एट विच आई शिफ्टेड टू कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन हो जाता था अराउंड 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में, थोड़ा जल्दबाजी करके. देन आई वुड कम बैक टू मैथ्स. आई थिंक इन द लास्ट आई थिंक इन ऑल थ्री सीसैट्स आई अटेम्प्टेड अराउंड 72 to 75 क्वेश्चंस. There were some maths questions जो मेरे से भी नहीं हुए थे. But I think the good thing was that I did not try to force those questions. I went to the comprehension questions and I हम्म। accepted that नहीं हो रहे कोई बात नहीं. That is good, Yes. that is good. And coming to the mains, so in your first attempt when you were not able to clear the cutoff of the prelims, so were you focused more on the pre, or you were preparing both pre and mains? Can you please tell me when did you plan to start your mains and how you have planned your mains? थोड़ा सा मेंस के बारे में। Sir, first attempt was in 21, तो तब prelims अक्टूबर में था. So for October, November, December, I did only mains, and from around January first week, I shifted to complete prelims. Because एक बार मिस हुआ था तो दूसरी बार था कि बहुत ही और एफर्ट डालना है. बिल्कुल। So for those, I think June 27th को था, I think 22 का prelims. So those 6 months I did only and only prelims. And in those 3 months, sir, one I did a lot of answer writing, and second I created very short notes from the notes that I had already created. So हम्म। micro notes जो उन्हें मैं कहता हूँ सर, ये मुझे बहुत हेल्प किया. एंड आंसर राइटिंग सर, दैट वाज एक्चुअली अमंग्स द लास्ट फेज ऑफ माय आंसर राइटिंग. उसके ओके। बाद मैंने जीएस में रिवीजन को प्रायोरिटाइज किया सर. टेस्ट लिखे थोड़े बहुत, बट रिवीजन बिकॉज मेरे माइक्रो नोट्स बना लिए मैंने, उनने मुझे बहुत हेल्प किया सर. एंड मैथ्स सर्टेनली हैड टू बी डन अ लॉट. Coming to the means in the essay, GS, optional, there are n number of things to do. And this particular means, as you know, that 21 days are less than the actual time. So, what should a candidate keep in their mind so that they will not waste much time on panicking? And what should be the strategy for a candidate? So first thing, so I would say is that within 2 to 3 days of prelims ending, people should start studying. Whether they are sure of clearing or not, they should start studying with good level of seriousness. So now strategy will certainly depend on the person's optional and their level of prep in every paper. Broadly for me, sir, maths optional, especially keeping in mind that last year in CSE 22, I had a good in GS but very low in maths. So I prioritize maths optional. But in general, बात करें तो sir,
जीएस भी करना है, ऑप्शनल भी करना है. दिस इज वन लर्निंग आई हैव फ्रॉम सीएसई 22, दैट वी कैन नॉट ओवर रिलाई ऑन एनी पेपर. सर हम्म इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट 22 में आई हैड थॉट दैट मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत अच्छे लाऊंगा, स्पेशली मैथ्स पेपर 2. एंड जीएस में थोड़े कम भी आए तो चल जाएगा. सर जीएस में आई गॉट 463, विच वॉज आई थिंक फोर्थ हाइस्ट दैट ईयर. मैथ्स पेपर 2 में आई गॉट 100, विच इज प्रोबेबली अमंग्स द लोएस्ट, अबिस्मली लो. तो ये सर है कि सारे पेपर स्ट्रांग होने चाहिए. ऐसे पे भी ध्यान देना है, जीएस के चारों पेपर्स पे, ऑप्शनल के भी, एंड लेटर ऑन इंटरव्यू पे भी. तो थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच, दैट इफ यू थिंक यू हैव डन इनफ विद ऑप्शनल देन जीएस भी कर लिया. अदर थिंग्स दैट मैं थोड़ा ऐसे कंटिन्यूटी बना के रखता था, दैट इवन इफ राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन मैथ्स देन जीएस, बट आई वुड ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ जीएस एवरी डे, ताकि मेमोरी रिटेंशन में आई फेल्ट इट हेल्प मेमोरी। मी अ. यस सर, बट अगेन बाकी एग्जैक्ट डिवीजन तो ऑप्शनल पे डिपेंड करेगा एंड स्ट्रेटेजी पे. इट वुड बी गुड अगर नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं. उन 70-80 डेज में नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो जाता है काफी, जो लास्ट ईयर मेरे मेंस में हुआ था. प्रॉबेबली उस केस में टॉपर नोट्स भी रेफर करे जा सकते हैं. तो इट डज हेल्प. मैंने मैथ्स में यूज की थी फॉर्मूला शीट दूसरे टॉपर्स की सर. And can you please tell me what is your score of maths in this particular attempt? यस सर, 311 सर. पेपर 2 में कितने नंबर पड़े? वन, इस बार 169 सर. अरे वाह, वेरी नाइस। तो इस बार यस, उतने ही वर्क किया था जो लास्ट टाइम किया था, या फिर कंपैरेटिवली बराबर ही था? थोड़ा ज्यादा तो किया था सर एफर्ट, ओवरऑल मैथ्स में भी. एंड आई ट्राई टू, लास्ट टाइम भी सर पेपर तो अच्छा गया था. व्हाट आई फेल्ट माइट हैव कॉज द लो मार्क्स वाज दैट मैथ्स में एक रिगरसनेस भी होनी चाहिए, दैट वे ऑफ राइटिंग डज बिकम इम्पोर्टेंट इन पेपर 2 स्पेशली आई थॉट. तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया. अदरवाइज सर प्रैक्टिस मोर और लेस सिमिलर थी. अनदर चेंज आई मेड वाज दैट एकदम ही एग्जाम से अलाइन कर दिया. लास्ट ईयर आई रिमेम्बर थोड़ा ऐसा था दैट इन ट्राइंग टू चेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई वेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द डिमांड ऑफ द एक्चुअल एग्जाम. इस बार मैंने पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज पे ही स्टिक किया, ताकि स्ट्रिक्टली वो पढूं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. दैट आई थिंक हेल्प मी सर. एंड कईयों बार ना ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर पेपर को पिक कर लेते हैं, पूरी जान लगाते हैं, पूरी जान, और उसी में नंबर कम आते हैं। बाकियों में हम एवरेज सा काम कर रहे होते हैं, उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद में फिर एक थॉट आता है कि क्या फायदा है तैयारी करने का। सो आई बिलीव कि लास्ट ईयर ये आपके साथ में हुआ होगा, राइट? तो इस बार जीएस सर आई का थिंक स्कोर कैसे है? इस बार 450 आए सर. तो इस बार गया अगेन, ज्यादा एफर्ट आ गया था बिकॉज लास्ट ईयर के नोट्स रेडी हो गए थे, जो लास्ट ईयर थोड़ा टाइम नोट्स बनाने में गया था. इस बार ओवरऑल भी सर आई फेल्ट दैट ज्यादा मोटिवेशन था समहाउ लास्ट टाइम से, तो इस बार काफी राइट। ज्यादा पढ़ाई की. आई थिंक कॉन्फिडेंस था दैट ऑलरेडी बीइंग इन सर्विस, थोड़ा स्ट्रेस हम्म। भी कम था. सो आई वाज एबल टू स्टडी अ लॉट मोर इन जीएस आल्सो, इन मैथ्स आल्सो. एंड बाकी ये सर अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन व्हाट यू जस्ट मेंशन सर, कि सारे पेपर्स पे फोकस करना चाहिए. कोई भरोसा नहीं कौन सा पेपर बिगड़ जाए गलती से, या उतना अच्छा मार्किंग पैटर्न ना हो उस साल. सो सारे पेपर्स में बैलेंस करके अपना बेस्ट करना चाहिए सर, आई थिंक. एंड कुछ लोग क्या हैं कि जीएस में खूब अच्छी तैयारी करते हैं, एंड देन दे डोंट एबल टू गेट मोर देन 400 मार्क्स। और आपके दोनों बार कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो जीएस में, मेंस में क्या ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखी जाए कि ना, मेंस में अगर आप ये करेंगे तो मार्क्स आता ही है, बिकॉज वी हैव सीन द मार्क्स ट्वाइस। सर आई कैन नॉट गारंटी कि ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्लाइट इंक्रीज इन मार्क्स बट डिक्रीज ही हुआ है. सर मेरी जो अप्रोच रही है मेंस के प्रति इज टू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्वेश्चन. इन हम्म अदर वर्ड्स क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. एक तो पेपर मैं खत्म करता ही था, एंड जो कहते हैं फिल एवरी वाइट स्पेस. इवन एथिक्स का पेपर आई रिमेम्बर लास्ट ईयर जो बहुत लेंदी था, उसको भी पूरा भर के आया था. सर नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वाज देयर इन माय नोट्स आल्सो, मैं पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बनाता था. रिवाइज करते हुए भी मेरा फोकस पॉइंट्स पे रहता था. एंड पॉइंट्स को मैं बहुत ज्यादा सब्सटैंशिएट नेचुरली देन नहीं कर पाता था, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स सर मेरे कुछ 10 मार्कर्स में भी मैं 15-16 पॉइंट्स लिख देता था, कुछ 15 मार्कर्स में 23-24 पॉइंट्स. सेकेंड थिंग सर इज वैल्यू एडिशन. तो कमिटीज, लैंडमार्क जजमेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसडीजीज आर्टिकल्स, ये सब मैं ट्राई करता था या तो इंट्रो में घुसा दूं या कंक्लूजन में. इनफैक्ट मॉक टेस्ट में चाहे उतना ना कर पाऊँ, एक्चुअल एग्जाम के में
बहुत अच्छे से कर पाया था. ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन और एवरी ऑल्टरनेट क्वेश्चन लेट्स से इंट्रो कंक्लूजन में यूज हो गया था. I think value addition shows to the examiner that you deserve slightly more marks than the average person. So I think that also gives a slight boost. तीसरा सर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी बहुत यूज करता था. मेरा बेसिक कंस्ट्रेंट ये था दैट मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो करंट अफेयर्स मेंस के लिए मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा था. दैट हम्म इज वन एरिया वेर आई कॉम्प्रोमाइज्ड. बट मेरा मेंस का स्टैटिक बहुत स्ट्रांग था. सिलेबस से मैंने नोट्स बनाए थे सर. आई शुड हैव स्टार्टेड विद दैट. स्पेशली हम्म जीएस 2-3 में बहुत यूजफुल होता है. लेट्स से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक टॉपिक है सिलेबस में, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग 10-15 पॉइंट्स होने चाहिए. लेट्स से प्राइस डिस्कवरी, इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रेस, ये सारे पॉइंट्स होंगे. तो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ हम लिख पाएंगे. इट इज लाइक हैविंग अ ब्रॉड कंटेंट ऑफ दैट टॉपिक, देन मॉडिफाइंग इट एंड फिटिंग इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. उसमें आगे वैल्यू एडिशन डाल दिया, एग्जांपल्स डाल दिए, तो इवन जो क्वेश्चन हमें नहीं आता वो मैनेज हो जाता है टू सम एक्सटेंट. बाकी अगेन सर थोड़े क्वेश्चंस में नेचुरली उतना अच्छा नहीं कर पाया बिकॉज करंट अफेयर्स के डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते ही हैं. बट ब्रॉडली इट वर्क वेल सर. okay. And when you take the maths, mathematics, as compared to other papers like PSIR, sociology, mathematics demand a rigorous practice for at least 10 to 12 months, if I'm not wrong. यस Right? सर. तो मैथ्स जो आपने लिया तो उसमें एक रिस्क ये होता है कि आपको ना एक पूरा टाइम जो है अच्छे से डेडिकेट करना पड़ेगा मैथ करने के लिए. एंड उसके चक्कर में जीएस कहीं ना कहीं सफर होती है. तो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने मैथ्स कब से चालू किया, कैसे ये किया प्लान, ताकि जो कैंडिडेट मैथ्स में हैं या जो उसको ऑप्ट करने का प्लान कर रहे हैं, सो दे शुड नो कि ये जो बातें हैं वो माइंड में लेके रखें. यस सर. आई थिंक वन थिंग आई शुड मेंशन इज दैट 2018 तक 2017 तक कनिष्क कटारिया सर के टाइम तक मैथ्स हम्म यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली हाईली रिवॉर्डिंग. हम्म. 360 375 तक आ चुके हैं मार्क्स. दैट इज आई थिंक द मेन अट्रैक्शन फॉर पीपल व्हेन दे गो फॉर मैथ्स. बट अब थोड़ा रिड्यूस हो गया है. अब 330 तक ही जाते हैं मैक्सिमम. सो सर आई स्टार्टेड मैथ्स इन अप्रैल 2020. ऑप्शनल डिसाइड भी उसी के अराउंड 1-2 महीने पहले किया था. फॉर मी सर मैथ्स, माई मैथ्स हैज बीन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है. आई थिंक सर आई डिड नॉट इवन कंसिडर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल. मेरा बस डिलेमा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्सेस मैथ्स. इन रेट्रोस्पेक्ट सर आई डू थिंक आई शुड हैव कंसिडर्ड ह्यूमैनिटीज ऑल्सो. शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था अपनी मैथ्स पे, तो मैथ्स ले लिया सीधा सर. बट सर बिगेस्ट पॉजिटिव अबाउट मैथ्स इज दैट इट्स अ वेरी रिलायबल ऑप्शनल. ऐसा नहीं होगा कि किसी साल मैथ्स में मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे, किसी साल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, विच हम्म डज हैपन विथ ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स. विद यू. कभी फ्लक्चुएट कर सॉरी सर, फ्लक्चुएट करती है कभी कभार. बट इन मैथ्स इट इज मोर और लेस स्टेबल. एवरी ईयर मैथ्स टॉपर डज गेट अराउंड 320 और 330. Second thing is that over time, sir, maths build up हो जाता है. The nature of questions is also not changing too much. So I think maths is a high effort, low risk subject, sir. But having said that, it is very high effort. So if a person has a good talent for maths and has a good amount of time, sir, because जरूरी नहीं है मैथ्स ऑप्शन में फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैथ्स भी कर पाए, जीएस भी कर पाए. हम्म. हो सकता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट लग जाए. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सर मैथ्स इज गुड आई थिंक. एंड कोई ऐसी जो हम जब ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत लंबा टाइम देना है. आपने आईआईटी भी पास किया है, आपने सिविल सर्विस भी किया है पास. कैन यू डिफरेंशिएट कि क्या एक डिफरेंस लगा हो कि आईआईटी वाज डिफरेंट इन दैट सेंस और ये तो कुछ अलग ही दुनिया है. सर आई थिंक फॉर मी पर्सनली एक चीज थी दैट मैथ्स और फिजिक्स दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते थे. सो एंड केमिस्ट्री भी वाज फाइन. सो जेई प्रेप वाज नेवर अ बर्डन फॉर मी, इट वाज अ जॉय. हम्म इवन पढ़ाई करना वाज अ जॉय. बट यूपीएससी में सारे सब्जेक्ट्स नेचुरली इंटरेस्ट के नहीं होते. ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, ह्यूमैनिटीज वाले मोस्टली मुझे इंटरेस्टिंग उतने नहीं लगते थे. बट करना तो था. even the maths in UPSC that is not as interesting as JEE वाली maths. तो हम्म. definitely even despite getting bored पढ़ाई करनी थी. Often it did seem like a burden, but वो discipline लाना पड़ता था. Second thing I felt sir is that when we are giving JEE, तो stress शायद उस लेवल का नहीं होता जितना यूपीएससी में होता है. Because when we're 23-24 year olds, तब ज्यादा समझ आता है कि जॉब का सवाल है, करियर की बात है, क्या करेंगे. तो ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है आई फील.
बहुत और फियर आ जाता है, जहाँ इग्नोरेंस चली जाती है थोड़ी। अदर देन दैट सर, नेचर ऑफ एग्जाम तो डिफरेंट है ही। जेई इज एमसीक्यू बेस्ड, यहाँ पे सब्जेक्टिव है, एंड यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी भी है। वन थिंग सर इज दैट जेई में आई थिंक स्किल और टैलेंट काफी मैटर कर जाती है, हम्म। बट यूपीएससी में आई थिंक हार्डवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। persistence and hard work does pay huge dividends sir. कमिंग टू द, एक बहुत अच्छा सवाल होता है ना कि टॉपर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो Hmm. लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि Yes. आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? Sir, I think average I would say around 9 to 10 hours, कभी ज्यादा कभी कम। बेसिकली सर मैं घर पे ही पढ़ता था, तो द गोल यूज टू बी टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर। ऐसा भी ना हो कि एक महीने बहुत ज्यादा पढ़ लिया फिर थक गए एग्जॉस्ट हो गए, तो थोड़ा मॉडरेट उस सेंस में कर देता था। मे बी स्लाइटली मोर देन दिस सर। एक जो आइडियल, जो एक शेड्यूल है जो हमारे माइंड में होता है जब हम तैयारी चालू करने से पहले प्लानिंग हाँ। करते हैं, तो वो 12-13 घंटे से कम का कभी होता नहीं है यस कि, सर। और वो पीक करेगा 15 घंटे पे। हाँ। और जब हम रियलिटी में आते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज एज यू हैव राइट। सेड ना कि जेई के टाइम पे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, यू कैन स्टडी 12 आवर्स इजीली। मजा आता है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। यहाँ पे तो लिखना भी है, नोट्स रिविजन। नोट्स भी बनाना है, तो बहुत सारी समस्याएं। तो आइडियली कैसे प्लान करें कि ताकि फटीग भी नहीं आए, एग्जॉशन भी नहीं आए, और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी रहे तैयारी, बिकॉज अगर ये तैयारी पनिशमेंट बन गई देन बड़ी दिक्कत है। सर एग्जैक्ट कैसे डिसाइड करें ये तो मुश्किल है, बट डेफिनेटली एज यू मेंशन, प्रिंसिपल्स ये रहने चाहिए कि मैक्सिमाइज करना है बट विद इन ओन लिमिट्स। थोड़ा डायनामिकली अगर देखें खुद को विद इन 1 वीक 2 वीक ऑफ फॉलोइंग अ शेड्यूल, थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि थकान ज्यादा हो रही है। लेट्स से हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड 1 वीक अगो, कंपेयर टू दैट एंथुजियाज्म लेवल भी अगर कम दिख रहा है क्लियरली, मार्क डिफरेंस है अगर टायर्डनेस में, तो उसका मतलब है कि शायद थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। आई पर्सनली फील दैट सर स्लीप को नहीं सैक्रिफाइस करना चाहिए। चाहे हम्म। रिक्रिएशनल टाइम में कट डाउन कर देता था, बट आई ट्राई टू हैव एटलीस्ट 7-7.5 आवर्स ऑफ स्लीप। मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जिन दिनों कम सोता था उन दिनों स्ट्रेस भी बढ़ जाता था। सो सर दिस वाज वन थिंग। सेकेंड थिंग सर, अगेन एवरी फ्यू वीक्स और सो अगर बहुत टायर्डनेस हो रही है तो थोड़ा ऑफ ले सकते हैं। इन द लार्जर पिक्चर सर उतना मैटर नहीं करता है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि ऐसे कैसे ब्रेक ले लें, हम्म। गिल्टी लगता हम्म। है, बट लॉन्ग टर्म में सर इट्स नॉट अ बिग डील। बस नेचुरली इट शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज, जेन्युइन केस होना चाहिए। यस। और ऐसा नहीं हो कि जो तैयारी है वो पार्ट टाइम बन जाए और ब्रेक फुल टाइम बन जाए। यस। Ayan, last year you got 87 rank, and 87 rank is very good rank, right? उस रैंक के बाद में फिर से पढ़ाई करना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। लेट मी टेल यू कि एक बार रैंक तक आना, उसका डिफिकल्टी इज डिफरेंट, लेकिन उस रैंक को इम्प्रूव करना, बिकॉज यू आर फाइटिंग हार्डली फॉर 20-30 मार्क्स, 40 मार्क्स। यस। अर्लियर यू आर फाइटिंग फॉर 1750 मार्क्स, राइट? तो थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। तो इस टाइम पे अपने आप को कैसे बैलेंस किया, और एक ना वो फेज भी आता है कि यार अब सर्विस में है, ठीक है, देखेंगे अब, तो एटीट्यूड थोड़ा सा लाइट होने का भी चांस रहता है। हाँ सर डेफिनेटली। सर मोटिवेशन की बात करें तो सर पहली चीज तो थी दैट अगेन एज आई मेंशन मैथ्स में थोड़े कम आए थे, तो इसमें मुझे लगा दैट सर ये तो मैं नहीं होने दूंगा, मैथ्स में तो मार्क्स लाने ही है। सो ये तो मैं कर सकता हूँ, दैट वाज अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। सेकेंडली सर अगेन ऐसा था कि 87 ले आया था, तो काफी कॉन्फिडेंस था कि शायद इस बार 1 भी आ सकती है। तो लेट्स से हम्म। अपने आप को मोटिवेट करता था एक बड़ा टारगेट देके। लास्ट सीएसई 22 तक टारगेट था कि आईएएस बनना है। सीएसई 23 में मैंने अपने आप को चैलेंज किया दैट 1 से कम सोचना ही नहीं है। अब आई नहीं नेचुरली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट 1 को देखते हुए अपने आप मोटिवेशन और बढ़ जाता था। देन आई टोल्ड माई सेल्फ सर दैट एक तो रिजल्ट के 5 दिन बाद प्रीलिम्स था, तो इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ स्टडिंग फॉर अराउंड 100 more days। उसके बाद इंटरव्यू प्रेप आई हैड ऑलरेडी सीन, इवन दो रिग्रेस इट इज फन टू सम एक्सटेंट। fun। तो बस 100 डेज का डिसिप्लिन, 100 डेज लेट्स से डिस्ट्रैक्शन से बचना, अपने आप को मोटिवेट करना। तो 100 डेज सर आई यूज टू डू दिस, आई पुश्ड माई सेल्फ मच मोर देन आई डिड लास्ट ईयर, इसी सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन के लिए कि अब रैंक 1 भी ला सकते हैं। तो एकदम आग लगा दी सर अपने। एंड वो आग लगी तो फायदा हुआ, आपका बहुत अच्छा यस। रैंक रहा।
जी सर। And if I may ask, when I look at you, I don't think that you get influenced by the social media and this. You look like a very serious candidate to me. लेकिन क्या आप सोशल मीडिया यूज करते थे? सर 22 के टाइम में तो मैंने व्हाट्सएप पूरा ही छोड़ दिया था फॉर अराउंड 1.5 years, मैंने खोला ही हम्म। नहीं। उसके बाद बिकॉज आईपीएस हो गया था, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कई बार व्हाट्सएप पे होता था। फॉर दैट रीजन आई वाज ऑन व्हाट्सएप, बट काफी लिमिटेड ही यूज करता था। मोबाइल पे इनफैक्ट मैं टाइमर्स लगाता था कि एटलीस्ट सुबह ना यूज करूं व्हाट्सएप, बिकॉज आई फेल दैट मॉर्निंग इज द प्रोडक्टिव टाइम, तो लंच ट्रू। के पहले नहीं यूज करना है। एंड सर एज सच बाकी किसी इंस्टाग्राम वगैरह पे तो मैं था ही नहीं, तो दैट वाज गुड फॉर मी, इट वाज इजी फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, आदत ही नहीं थी क्योंकि सर। एंड इस साल कुछ कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया and they didn't find their name in the list, and some of them have found their name but they didn't get the rank, and again they are going through the same phase कि यार मैंने ना सारा कुछ कर लिया, आई हैव डन एवरीथिंग। किसी ने बोला ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मैंने कर लिया। किसी ने बोला ऐसे आंसर लिखो, पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट में लिखो, डेटा फ्लो चार्ट, एवरीथिंग आई हैव डन बट आई डिडंट गेट द मार्क्स। बट बाय लुकिंग एट योर डेडिकेशन, कि मेरे मैथ्स में 100 नंबर कैसे आए, पेपर 2 में मेरे 100 आ कैसे गए, इसको तो मैं यहाँ पे तो आई विल नॉट एंड माई जर्नी, राइट? तो कैन यू प्लीज से समथिंग फॉर देम कि सब कुछ करने के बाद भी दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व? सर आई थिंक वन रीजन समटाइम्स ऑफन इज द सोल रीजन इज शायद लक ने साथ नहीं दिया। शायद वो बिल्कुल डिजर्व करते थे, इवन टॉप 20 डिजर्व करते हो, बट लक ने साथ ना दिया हो। या हो सकता है कि कहीं कुछ बिगड़ गया हो, कोई एक पेपर बिगड़ गया हो या इंटरव्यू बिगड़ गया हो, दैट मे हैव कॉज द इशू। अदर थिंग इज दैट सर कई बार पता नहीं चलता है कहाँ इंप्रूवमेंट आ जाए। बिकॉज सर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू रैंक वन, उनके हम्म। जीएस में 70 मार्क्स इंक्रीज हुए। 70 मार्क्स फ्रॉम 400 टू 470 इज सिंपली फिनोमिनल सर। पता नहीं कैसे किया, अब वही बताएंगे। हम्म। बट आई थिंक सर वी कैन ऑल यूज हिम एज इंस्पिरेशन दैट स्कोप होता है, दैट इम्प्रूव करा जा सकता है। बिकॉज इम्प्रूविंग दैट मच इन हार्डली आई थिंक 3 और 4 months, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे। मेरे और दोस्तों ने भी 30-40 मार्क्स इंप्रूव किया है, तो इम्प्रूवमेंट काफी होता है। मैंने भी और लोगों को देखा है जिनका लास्ट ईयर नहीं हुआ था, रिजर्व लिस्ट से आ गए फॉर्चुनेटली, एंड इस साल उनका फिर अगेन टॉप 100 में आ गया थ्रू एफर्ट। आई नो 2 such पीपल। सो इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफी रहता है। एंड अगेन हो सकता है पहले लक ने साथ ना दिया हो, इस बार दिया, इस बार लक साथ दे दे, या फिर कुछ माइनर स्ट्रैटेजी चेंजेस से भी शायद बड़ा डिफरेंस आ जाए। सो आई वुड विश द बेस्ट फॉर देम सर, डेफिनेटली। अयान, कई बार ना मुझे ऐसा लगा करता है कि आप ना सुनो सभी की, लेकिन करना तो आपको अपने मन का चाहिए, क्योंकि आपका जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करता है। पर कई बार क्या है, फेलियर के बाद में भी लुक फॉर द बज वर्ड्स की टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, चलो मैंने कभी बैठ के किया नहीं टाइप। तो खुद पे जो बिलीव है, जैसे आप में था, आपने बाकियों का भी जो भी एग्जाम्पल लिया कि भाई सभी ने मार्क्स को अच्छा बढ़ाया है, एंड आपके खुद के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आई बिलीव कि खुद पे जो ट्रस्ट है वो कहीं ना डामाडोल हो जाता है जब आप एक फेलियर के साथ में निकलते हैं। तो उस फेज में खुद को एक बूस्ट करना जो है, तो आई थिंक एक हायर टारगेट देना, जैसे आपने दिया कि अब रैंक 1 के लिए तैयारी करूंगा, दैट वे इट माइट हेल्प। एंड एंड एनीथिंग फॉर द कैंडिडेट जो इस तैयारी में आ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एनी मैसेज फॉर देम फ्रॉम योर साइड? सर आई वुड से दैट एग्जाम को एनालाइज ढंग से डेफिनेटली करें, पीवाईक्यूज को देख के, क्वेश्चंस को देख के, ताकि प्रेप हमेशा एग्जाम से अलाइंड रहे। ऐसा ना हो कि कुछ और पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कुछ और आ रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट मेंस एंड मेंस करंट अफेयर्स। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स में काफी ज्यादा नोट्स बना लेते हैं, बट उसकी यूजेबिलिटी बहुत कम है एक्चुअल एग्जाम में। हम्म। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड हम सबके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अगर 1000 पेज के नोट्स हैं तो उनको मेमोराइज नहीं करा जा सकता। सो वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिडिक्टेबल एंड द हाई प्रायोरिटी एरियाज। सेकेंडली सर डेफिनेटली दैट हार्डवर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स जो जिनका इस बार सिलेक्शन हो गया, कि अगर फिर से एग्जाम दे रहे हो तो फुल सीरियसनेस के साथ देना। बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना कंपटीशन है कि कॉम्प्लेसेंसी कहीं नहीं आनी चाहिए।
तो अगेन हार्डवर्क करना है, हर पेपर में हार्डवर्क करना है। एंड लास्टली सर, एज यू सेड कि सेल्फ ट्रस्ट भी रखना है एंड बर्नआउट भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, उन सबको बैलेंस करना है सर। Ayan, thank you for your time. It has been थैंक यू pleasure सो to मच सर। talking to you again, यस। and I wish you all the very best for your career थैंक ahead. यू। थैंक यू सो मच Okay, सर। Ayan, have a good night.